Hello everyone, welcome again. Today we are going to start a new subject which is known as computer graphics. Okay, so this is the first video of computer graphics, and in this video we are going to cover the introduction part of computer graphics. Okay, so as you can see that computer graphics is the combination of two words, that is computer and graphics. Okay, so we know what do you mean by computer. So now we are going to understand what do you mean by graphics. Okay, after this we will combine both computer and graphics, we will summarize it, and finally we will easily know what do you mean by computer graphics. Okay, so let's understand what do you mean by graphics. Graphics means to plot some points on a graph to make an image. Okay, यानी कि ये क्या है, एक ग्राफ पेपर है. ग्राफ पेपर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. इन सभी पॉइंट्स को जोड़ के अगर हम एक इमेज क्रिएट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्राफिक्स. ओके, ठीक इसी तरह हम अगर कंप्यूटर स्क्रीन को एक ग्राफ पेपर समझेंगे. ओके, और यहाँ पे जैसे पॉइंट्स होता था, यहाँ पे बहुत सारे पिक्सल्स, आपको पता है ना, कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड विद द नंबर ऑफ पिक्सल्स. तो यहाँ पे जैसे पॉइंट होता था, यहाँ पे पिक्सल्स होते हैं, और इन सभी पिक्सल्स को अगर जोड़ के हम अगर एक इमेज क्रिएट करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स. ओके, देखो, to plot some point on a graph to make an image is known as graphics. ये होता है ग्राफ पेपर में. ग्राफ पेपर में इन सभी को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं. देखो, पॉइंट्स एंड ग्राफ, ये है ग्राफ पेपर एंड ये सब है पॉइंट्स. ठीक इसी तरह अगर एक ग्राफ पेपर की जगह में हम कंप्यूटर को रखेंगे, यानी कि कंप्यूटर को ग्राफ पेपर सोचेंगे, और यहाँ पे जैसे पॉइंट्स होता था, ठीक उसी तरह हम कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सल्स को लेंगे. ओके, और उन्हीं पिक्सल्स को लेके अगर हम एक कंप्यूटर में एक ग्राफ या फिर एक इमेज क्रिएट करेंगे तो हम उसी को बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स. ओके, so if we'll go for the definition of computer graphics, then computer graphics is a rendering tools for generating of images, manipulating of images, and storage of picture for proper visualization using a computer. It means computer graphics is a tools which provide us different services. Rendering means services for generating of images, यानी कि बहुत सारे different type of image generate करने के लिए हमको computer graphics tools provide करती है. Okay? In the other hand, manipulating of images means transferring or alternating a photograph using various methods and techniques to achieve desired result. It means whenever we click a photo on your mobile phone, the quality of the picture is not good, right? So that we have to edit our picture to look better than that. Okay, to achieve the desired result, right? That is known as manipulating. यानी कि transforming of images from one form to another is known as manipulating. So computer graphics also provide us for manipulating of images, right? And storage of picture for proper visualization using a computer is known as computer graphics. Okay, so this is the introduction part of computer graphics, and in the next video we are going to see the CRT. Okay, so that's all for today. Thank you, bye bye.